आज मैं एक बेबी का स्केच बनाने जा रहा हूँ। इसको बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे का टाइम है। स्केच को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना होता है। अगर आउटलाइन बन जाती है तो हमारा आधे से ज़्यादा काम हो जाता है और बाकी काम ब्लेंडिंग और शेडिंग का रहता है। इस स्केच को बनाने के लिए मैं आउटलाइन ड्रॉ करने के साथ साथ ब्लेंडिंग भी करते जा रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो पहले ड्रॉ करें और फिर एक साथ ब्लेंडिंग कर सकें। ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने कोई महंगे टूल का यूज़ नहीं करा है। यहाँ मैं एक नॉर्मल ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ जो मैं पेंटिंग बनाने में यूज़ करता था, और रुई का यूज़ कर रहा हूँ। साथ ही साथ कागज़ का एक टुकड़ा ले रखा है जिसको मैंने रोल कर लिया है, जो कि ब्लेंडिंग स्टैम्प टूल का काम करता है। मैंने हाईलाइट एरिया के लिए बोलो इरेजर का यूज़ करा है, जो कि मैंने खुद बनाया है। साथ ही साथ नॉर्मल इरेजर को कट करके भी यूज़ करा है। इस स्केच में मैं ग्रिड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। ग्रिड का यूज करने के लिए एक बात का ध्यान रखें कि ग्रिड की लाइन ज़्यादा हार्ड ना बने, जिससे कि बाद में ब्लेंडिंग के समय वो लाइन दिखे नहीं। करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि लाइन ज़्यादा हार्ड ना पड़े, जिससे कि वो ब्लेंड आसानी से हो जाए।